Shoaib in particular, who I could see it in the eyes of the batsman that there was fear. लेकिन रवि भाई इतनी सख्त क्रिकेट कर दी है, इतना बैटिंग ओरिएंटेड क्रिकेट कर दी है, क्रिकेट को कहाँ लेके जा रहे हैं आप? लेकिन बैलेंस अगर करना है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ ये 2 बाउंसर नहीं होना चाहिए. Yes. Over, वो बड़ा हो. अच्छा सोचे अगर विराट होता, रोहित शर्मा होता, वसीम अकरम होता, शोएब अख्तर होता, ये सवाल सारे ही करते हैं. No disrespect, विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट गाय एवर, वी ऑल लव हिम एनीवेज. और वका यूनुस होता और एक बॉल होता और रिवर्स स्विंग होता, फिर क्या होता? Rawalpindi Express has left the station. जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शो यूट्यूब चैनल. और आपके लिए इस दफ़ा मैं ऐसे शख्स को बुलाने जा रहा हूँ जो आपके बहुत चहेते भी हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की टीम को खिलाया, सिखाया और फिर जितवाया भी, और उनको बच्चों की तरह ट्रीट किया. और मैं उनको इंडियन इमरान खान कहता हूँ, क्योंकि वो ना सिर्फ लड़कों से लाड करते हैं, प्यार करते हैं, अपना मानते हैं, बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, और फिर उन पर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा इंजेक्ट कर देते हैं कि वो सुपरस्टार बन जाते हैं. नन अदर देन मिस्टर रवि शास्त्री सर. Pleasure, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप? अच्छा लगा. थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन. वेरी हम्बल्ड बाय इट, बट Tell me रवि भाई, ठीक-ठाक हूँ मैं. आपके घुटने कैसे हैं? मुझे सबसे पहले लोगों में ये देखना होता है how they are feeling, because since I am struggling with the knees for last 23 years, how's your knees? Bad, very bad. In fact, as you speak, in about 10 days time I'll go and probably get my knee operated, probably Ji. get a replacement done, maybe partial, maybe full, but I've struggled with it since my playing days, and then really got bad in the last 5-6 years, but unfortunately team के साथ था, so you couldn't do anything क्योंकि ब्रेक ही नहीं मिलता है. Break ही नहीं ये मिलता है. प्रोफेशन में 250-300 दिन साल के टीम के साथ रहना पड़ता है, तो काफ़ी मुश्किल था. लेकिन you have to go through the pain barrier as we've done in our playing days and wait for the right time. I think समय अब ठीक है करने के लिए. Ravi bhai, you became one thing, I mean if I'm not wrong, you became an institution over 3 decades. आप ग्रेड्स के साथ भी खेले, आपने मैच भी जिताया ऑस्ट्रेलिया में, आप कंपेटिटर भी थे, फिर आप कमेंटेटर भी थे. फिर इतना सारा कुछ अचीव कर लिया आपने, तो फिर आपको क्यों ख्याल आया कि यार मैं इस आग में छलांग लगाऊं? और देन आई हैड टू गो थ्रू हेल ऑफ फायर to make it this far, and you've been very successful. Why? What made you do that? In fact, शोएब मैं सोचा भी नहीं था. Means I was doing commentary at the Oval जब फ़ोन बजने लगा. It was the then BCCI president, Mr. Srinivasan, who was on the line with me. और मेरे आधे घंटे के स्टिंट में काफ़ी फ़ोन्स आए. मैच चालू था ओवल में, I was doing commentary and India were losing the series. Last test था. जब उन्होंने कहा रवि ऐसा टाइम आ गया है where I think someone like you, if you're with the team, अच्छा हो सकता है. तो मैं बोला मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट्स है टेलीविज़न चैनल्स के साथ सब कुछ. बोला नहीं, वो सब हम संभाल लेंगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट चीज़ है. Right. तब मैं बोला मुझे एक दिन तो दो, लेट मी डिस्कस विद माई फैमिली. फिर क्योंकि विल मीन अ टोटली डिफरेंट माइंड सेट, स्पेंडिंग मैनी डेज आउट विद द टीम. तो मैं एक दिन सोचा, फिर मैं बोला ना ये टीम तो अच्छी है, इट इज़ जस्ट the way they should play the game, the way they should approach the game, that has to change. I'm not happy with that. लेकिन ये जो आपका माइंडसेट है, ये वो लेट 80s वाला माइंडसेट है जो आप इंजेक्ट करना चाह रहे थे. बिल्कुल ये क्लियर कर दे लोगों को. बिल्कुल, because I played in an era जो हम वो 1980s के era I think was one of the toughest eras. Yes. And I made my debut at the age of 18. Between 18 and 28 I went to 3 tours of Pakistan. Wow. And 2 tours of the West Indies. अच्छा. 3 tours of England. So you played all the hardest cricket. My first 100 was in Pakistan against a world-class attack. And when you have Imran, Sarfraz, Bhau, Qadir, and the gang, and in a series where you're being hammered at 19, if you can get 100 in Karachi, and then 2 months later 100 in the West Indies. Wow. Against Holding, Marshall, Ghana. तो मतलब जो mindset होता है by the age of 20 with 200s behind you overseas, वो भी it changes your entire
perspective of how you want to play cricket. You know, you Exactly. don't want to be there to fill the numbers. Yes. You want to be one of the best in the world. You want to compete and you want to win. yes You know, and you want to win within the rules. Play it really hard, but play it fair. So I found that ये जो team जो था, you know, I wanted them to be fearless. Right. I thought they were carrying a lot of baggage. You know, दुनिया भर का baggage, you know, उनके shoulders पे था. They were treating cricket like a desk job. मतलब जो कंप्यूटर के पीछे बैठते हैं 9 to 5. अभी cricket is to be enjoyed. yes धूप में पब्लिक आता है देखने, millions are watching around the world. अरे बटन खोल के खेलो यार. हाँ खेलो You know, बिल्कुल in that, you can win or you lose. But if you play fearlessly, not afraid of losing, that's when you start winning. so you hated that typical mindset of the coaching बिल्कुल era that you know लैपटॉप बैठे ये कर लो लेंथ बॉल कर लो वो कर लो आई बिल्कुल। कर लो क्या है ये आपने आपकी मिथ तोड़ दी है नहीं नहीं, you understand the strengths of the individual and make sure that it fits into the team strength और जाके खेलो यार. भाड़ में गया दुनिया, खेलो. लोग खेलो। बोलने वाले बोलेंगे, हाँ। एक्सपर्ट्स का काम है बोलने के लिए, and we don't mind that because Yes. they all have to do a job. It's paid jobs, just like we do jobs that are Yes. paid jobs. So go with the flow, but at least be very clear in your mind कैसा खेलना है. एग्जैक्टली You know, once you have a way or a method of wanting to play, then opposition doesn't matter, pitch doesn't matter. So after a while, very soon we took the pitch out of the equation. बोला ये क्या है? 22 yards दोनों टीम के लिए. अगर you want to conquer that, क्या करना चाहिए? What should be your best 11? How do you play? How do you adapt to those conditions better than the other team? Don't think you're playing at home or away. वो 22 yards पे खेल रहे हैं. अभी कैसे conquer करना है वो 22 yards better than the opposition. अच्छा जय कहीं आपको Simple लगा कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ यार एक साल विद इन अ ईयर ऑफ जॉब आपने सोचा यार व्हाट आई गॉट माई सेल्फ इनटू इट. मैं कोशिश कर रहा हूँ लोगों को समझाने की यार ऐसे खेलो जैसे शेर खेलते हैं. आपका एटीट्यूड तो बिल्कुल ही एक तो कहते हैं ना हम हमेशा ड्रेसिंग में कहते हैं रवि भाई मेरे ख्याल में गलत जगह पैदा हो गया एटीट्यूड का पाकिस्तानियों जैसा कि आप ना दलेरी से आते हैं लड़ते हैं झगड़ते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं मार दूंगा. लोग कहते हैं यार रवि भाई बहुत कैजुअल है. मैंने कहा कैजुअल नहीं है वो मेरा है ये वो माइंडसेट है जहाँ पे क्रिकेट बड़े खुले दिल के साथ खेली जाती है. ये इंजेक्ट कर रहे हैं. कभी आपको एक पीरियड में लगा यार इतना क्रिटिसिज्म आ रहा है मेरे पे यार मैं अच्छा आप उसके बावजूद फिर भी खेलते रहो जीतते रहे ये कैसे किया? You know something, शोएब, मुझे कभी समझ में नहीं आया क्योंकि मैं बहुत कम पढ़ता था, बहुत कम सुनता था, लेकिन you know that subconsciously you knew क्या हो रहा है. You know, I'll be lying if I say that, if I don't say that. लेकिन जब जितना मुसीबत ज़्यादा हो तब इनर ताकत बढ़ जाती कहाँ है. से आता था मुझे पता नहीं. ऊपर वाला सही टाइम पे आता था. He would give you that strength, and you know it, and like I say, in adversity you learn the most. Yes. मतलब एडवर्सिटी में जो बंदा सीखता है और इफ़ यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू दिस थिंग इज़ अनबिलीवेबल. जैसे हम 36 ऑल आउट हुए, यू टर्न इट. कोविड आ गया ऑस्ट्रेलिया में, क्वारंटीन में, ये वो, यू नो इट वाज डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट टाइम्स ऑफ प्लेइंग. यू कॉन्कर्ड दैट एंड यू वेंट ऑन टू विन. सो यू नो इफ द बिलीफ इज देयर दैट यू कैन डू इट, इट अप्लाइज फॉर बोथ टीम्स. सो देयर इज नो एक्सक्यूजेस. और जब हारते हैं ना, वन थिंग आई टोल्ड द टीम, कभी एक्सक्यूज नहीं देना. हाथ ऊपर करना, बोलना कि वी मेड अ मेस, एंड नो ब्लेम गेम्स इन द टीम. मतलब इसने नहीं किया ठीक, या इसने कैच छोड़ा, नहीं. आई मीन इट्स अ कंबाइंड लेवल एज अ टीम दैट लॉस्ट. रवि भाई एक बात तो ये भी ना, लोग ये कहते हैं कि आप तो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग थे, आपको भी पैसे की फिक्र नहीं रही. हम जॉब करते हैं पैसों के लिए. यार हमारे कहीं ये $1 million ज़ाया ना हो जाए कहीं. यू नो वी गोना हैंग ऑन टू इट, आई एम क्लिंग टू दिस जॉब नो मैटर व्हाट. और हम ऐसे टीसी बाज बनेंगे कि हमने जॉब कभी छोड़नी नहीं. उसके चक्कर में लोग फेयरलेस नहीं रहते. आपके ये माइंडसेट था ही नहीं, आपका पैसा इशू क्रिटिसिज्म में था ही नहीं. आप तो फेलियर को अपॉर्चुनिटी देखते थे और निकलते थे. बिकॉज in my mindset it is, if you excel, you know, with the best, all that you're chasing will follow. Yes. With multiple other things. Yes. You know, if you do your job properly and to the best of your ability. अभी 7 साल हो गए मैं ये काम करके, now I'm out of it, but now I realize the goodwill, the
accolades, the Admiration that the you're getting. admiration from the job satisfaction that you get, and the goodwill from the people and the fans. अब समझ में आता है, because at that time you don't realize, because every day of those 7 years you're being judged, Yes. and you are helpless. You're being judged by millions Millions of means dollars. every day, and personal team के बारे में जो भी है, and you have to take it. Today you realize that, I mean, hats off यार, how did you do it? It's still not sunk you've in. been- 7 साल कैसा निकाला? आपने ना बहुत मुश्किल कर दी, पता है रवि भाई आपने. भाई, We made it very difficult for next coaches to come. जिस तरह आपने टीम को खड़ा किया. अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने खड़ा कर दिया. It is hard to fill your shoes. I'm telling you right now. No disrespect to any other coaches. I love this guy, Raul Dravid, everyone. You love him. I love him. We both loved him. And many other coaches are going to come and coach Indian team, right? But the way you nurtured the Indian team, no one could have done that. And nobody has done that. आपने क्या किया इंडिविजुअल के साथ? आपने लाड बहुत किया, प्यार किया उनके साथ, आपने कॉन्फिडेंस के इंजेक्शन लगाए, क्या किया आपने उनके साथ? ये बताएं लोगों को. One thing I always wanted was कि trust हो dressing room, total trust, and you go about doing your job towards the direction of the team. मतलब पहले दिन से हम I word निकाल दे, it's we. There is no senior, there is no junior. बड़ा नाम, बड़ा रिकॉर्ड वो होगा किताबों में, ठीक, या स्टैटिस्टिक्स के लिए, बट इनसाइड द ड्रेसिंग रूम एवरीबडी इज वन. यू प्ले एज वन, हारो, टेक इट टुगेदर, विन, एंजॉय इट टुगेदर, एंड वी वेंट विद दैट माइंड. एंड फॉर मी एट टाइम्स आई रियलाइज दैट I have to be the elder brother at all times, like a father figure. Like a father figure. And take bullets. मतलब Yes. कभी if I had to say something out of the ordinary, पंगा लेने. हाँ ऐसे सिर्फ पंगा लेने. ऐसे ही. With the media or with anyone from the outside, I would make that statement. ताकि टीम को बचाएंगे? subconscious से पता चले कि हाँ. ये बोला है वहाँ पे, but he believes we can do that. Yes. Yet at the same time, he's not making us say. जैसा मैंने बोला एक बार कि I think the endeavor is to make this the best traveling team in the world. This is in 2017. People started laughing. ये क्या बोल रहे हैं? But indirectly, it was a challenge to the boys that I believe you can do it. Once we had a pace bowling attack in place. अब तुम सोचो. और वहाँ पे पड़ गई bullets. धप्पा धप. We lost in England 4-1. We lost a very close series in South Africa 2-1. England also 4-1. That series could have been 3-2 in our favor. Little bit of luck. लेकिन वो दो सीरीज हारने के बाद मुझे पता चला कि we are on the way. Now something big will happen. If we are strong and fit, fitness पे मैं बहुत ध्यान दिया. We both Virat and we insisted on certain fitness values for the team, and which did wonders. That's why the fast bowlers could carry on for that length of time without injuries, and we turned the corner in Australia. Now Australia is probably the toughest place in the world to play. Yes. I mean, you might have gone many Hundreds. times, because as a nation, their sporting culture is second to none. Yes. और जो they're born to play hard cricket. Yes. They're physically fit. They're tough. Mentally tough. Tough. Yes. And they want to win. Yes. They'll go. They'll do anything to try and win the game. They'll play it hard. And I knew that if we can compete here, and put it across them, that'll be the end game. Ultimate. And we went in 2015. We lost 2-0. और तब 2-0 हारे, और उधर भी we had a chance in one of the test matches, and then we drew 2 test matches. Now, and this is at Melbourne and Sydney. Yes. Batting on the last day to save the game. And I remember at the end of the series, Alan Border walked up and he said, Rav, hats off. You might have lost the series, but to bat on day 5 at the 2 Colosseums, that's Yes. SCG and MCG, match बचाने के लिए, it's big thing. It's a big. It's a big thing. Now people will realize what it is to bat the whole day of Yes, 5 hours yes, on the yes, last yes. day to save a game in Australia is not easy. And we did that. So I knew that the curve was turning, but it was just having belief in the players, pushing them day in day out, attention to detail. क्यों कभी-कभी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा आगे देखता है बंदा, जो नाक के नीचे जो है
वो सब भूल जाता है. भूल जाते You know, when you have to bloody be focused on that, and that little attention to detail will help you grow bigger. You know, it becomes muscle memory. सो not to forget. अब आप हिंदुस्तान को यहाँ छोड़ के गए Hmm. और ये आपके मुंह की बात नहीं, पूरी दुनिया कह रही है. Hmm. ये आप नहीं कह रहे हैं, पूरी दुनिया, मैं अक्रॉस द बॉर्डर एज अ पाकिस्तानी कह रहा हूँ. हमने देखा कि आपका बिलीफ सिस्टम ठीक हुआ. हमने ये देखा आपके फास्ट बॉलर तगड़े हुए. हमें ये भी पता था कि रवि भाई आएंगे तो वो तो एक काम तो जरूर करेंगे. उनके अंदर एक फास्ट बॉलर छुपा हुआ है जो आज तक निकला नहीं. उन्हें निकालना है थ्रू सिराज, थ्रू शामी, थ्रू यादव, थ्रू एनीवन ही. उन्हें निकालना है, अनलीश करना है. और आपकी सक्सेस और आपका सक्सेस रेट विद विराट कोहली, वो आपका था एबिलिटी टू टेक विकेट्स, राइट? पीरियड. And that I learned in the 80s, Shoaib, Yes. from Pakistan and from West Indies. Such bata raha hu. Those 3 tours of Pakistan taught me one heck of a lot. I mean, Imran was a champ. I mean, he was a fantastic leader, you know. And his main aim was to 20 wicket nikal in any of the conditions. Any of And then when you looked at Clive Lloyd, on the Yes. other hand, who was the other captain, you know, on the top, उसका भी वही दिमाग था. 20 कैसे निकाल सकते? रन तो बनेंगे, रन 200 भी बनेंगे. अगर 20 के चक्कर में गए ना, तो that 250 also can be winning score. So my mindset was very clear कि कैसे पकड़े 4 जो 20 निकालेंगे, ideally with different actions, यस, ताकि वैरायटी हो. एग्जैक्टली. बुमराह भी हो. फिर आ गया बुमराह, फिर आ गया ईशांत लंबा, ईशांत आ गया. फिर आ गया उमेश वुड, swing it, or उमेश आ Shami गया. would seam it. Shami. You know, so then you started building an attack around these 4-5 guys, and you know, Train mix them them hard. around and train them hard, and they played for 2 years, and I mean, their records were unbelievable. अच्छा I चलो. mean, जब if Jasprit didn't do the job, Ishant would. Ishant did Umesh, Shami would. So you know, it's just like when top teams play. If McGrath doesn't take it, Hazel would. You know, ये नहीं लेगा, Cummins नहीं लेगा, और कोई वो ले लेगा. इमरान नहीं लेगा, वसीम लेगा. शोएब नहीं लेगा, और कोई लेगा. You know, so if Holding didn't take a wicket, Roberts took. But they had those bowlers who could take 20. Till you don't have an attack that can take 20. And, you know, to compete overseas is very difficult. Did you, अब चलो out of मेरे ज़हन में ऐसे आ गया. Did you enjoy this last 1 decade or decade and a half of era of Pakistan cricket? I'll be very honest with me. To be honest, I thought they weren't playing to their potential. Yes. They had the team. They've always had the team. You know, they, you know, at times freeze on the big occasion, but enormous talent. Yes. And even when now towards the end of my stint, when I saw this team that played in the 2020 World Cup, which beat us, I knew there was a team there. I knew that's a good team in the making for 2020. Yes, yes. You know, it's work in progress for 50. And Timid क्यों हो गया? Yes, आपको क्यों लगा ये timid क्यों हो गया? I like. ये mindset क्यों timid हो गया इतना? No, आपने तो हमें खेलते देखा हुआ है. बिल्कुल. I think, see, batting. You need batting backed by bowling. Yes. You know, you need guys who can look at you in the face. If you look at your team in the 80s, you had some tremendous players. You know, you had Javed who would be right in your face. You know, Zed was a terrific player. Ramesh came later at the top, would do a very good job. And then you had your fast bowlers. See, when you have a good attack, you don't need 350, 400 here. No, you don't. हाँ? You don't. तुम 10 बैट्समैन भी लेके जाओ, तुम 500 करो, अगर विकेटें लेने अगर बॉलर नहीं है, फिर भी हारेंगे. So you know, the teams that have always done well in Test cricket are not teams that score 300, 400, 500. Teams that score 350, फिर उड़ाते. They take the game quickly forward. चलो मुझे ये बताएं रवि भाई. Not gonna take much of your time now. But tell me now. बहुत डिबेट होगी. हम कोई यहाँ पे कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू तो करना नहीं चाहते, ना को हम टफ क्वेश्चन करना चाहते. विराट कोहली सारे ये सवाल पूछ रहे हैं, तो कहानी छुड़वाई. मैं दुबई में था जब, मैं आपको सच बात बताऊँ, मैं दुबई में था, बहुत सारे हिंदुस्तानियों से मिला. मैं व्हाट इज हैपनिंग, उन्होंने मुझे एग्जैक्ट बताया था कि इट्स गोना बी आउट ऑफ द जॉब. मैं कहा अभी तो वर्ल्ड कप हो रहा है. कहता इज द लास्ट चांस टू विन दिस वर्ल्ड कप, टू रिटेन हिज जॉब. अदरवाइज ये होगा, पहले T20 छोड़ेंगे, फिर वनडे छोड़ेंगे, फिर टेस्ट मैच छोड़ देंगे, और रोहित शर्मा विल बिकम अ कैप्टन. मैंने कहा यार ये तो आप इंडियन क्रिकेट को डिस्ट्रॉय करोगे यार. और उसके इफेक्ट्स हमें इमीडिएटली नजर आना शुरू हो गए साउथ अफ्रीका. See, one thing you must realize, as a captain of India, or for that matter anywhere in the subcontinent, India per se, because of the volume of people, it's like being a captain or a coach of a Brazilian football team. Yes. All eyes on you.
Yes. You know, and when a person does well over a span of time, as much as people love it, Yes. there are a lot of people who hate it. Yes, Yeah, तो साफ yes, होता है yes, मुंह। yes, yes. The word J Yes, yes, comes yes. out. It's jealous. Yeah. And people do get jealous, Yes. which is a human trait. It is there, whether it's a good trait or bad trait, it's for people to this thing. I think it's a terrible trait, If you can avoid that, then keep it. No one is perfect who won't be jealous about something or Yes, the other. yes, yes, yes. But the top people are the people who have that to the minimum. So the pressure started building. Yes. People were looking for opportunities, and no human being is perfect. I've seen greats of the game who've quit captaincy to focus on their game, whether it's Gavaskar, Tendulkar, MS, when he did 3 formats, 94 टेस्ट मैचेस खेला था यार, आराम से वो, और 10-15 टेस्ट कप्तानी कर सकता था, but he gave it up. So I think with Virat also, he realized probably that it was getting too much to him in this COVID time. All 3 formats of the game. All 3 formats. मतलब break भी नहीं ले सकते. You can't take a break also. So I think he did the right thing by quitting from white ball cricket. Though when it came to Test cricket, I was a little surprised because 5 साल से we are the number 1 team in the world. Yes. और एक सीरीज से हारने से it doesn't ऐसा mean क्या हो that गया कि एकदम छोड़ना पड़ा? So probably, but at the end of the day, I always respect a cricketer's judgment because I don't know what he's feeling. Going through, yeah. Okay, you don't know what I am feeling. Going through, yes. And sometimes when it comes up to here, your body tells you enough. Let me just focus on my game. What I had to probably achieve as a captain, I've achieved. In fact, he couldn't have achieved more. More, yes. Yeah, 40 wins in 68 games is a stunning record It's for not a any joke. captain. It's not a joke. It's not a joke. So I think he realizes he's 33. He realizes he's 5 years of good cricket ahead of him. If he can calm down, focus on his batting, take one game at a time, probably take a break from the game as well. I think 2-3 महीना अगर वो निकल जाए ना किधर और takes a break from one series, it will do him a world of good. To come back and play those 3-4 years like a king. Yes. Absolute king. Absolutely. Where he's clear mentally, he knows exactly what his role is, his job is, and then plays as a team player. Yes. That's what I want to see Virat Kohli now. To come, contribute big time as a team player and help the team win. But at the same time, that should will not try be the too legacy hard, he can to leave prove behind. himself. कि यार मैं टीममेट हूँ, मैं जिता दूंगा मैं. Take it easy, यार. You're only human, right? Yes, yes. वो फॉर्म चली भी जाएगी, आ भी जाएगी, कुछ ऐसी बात नहीं. अच्छा मुझे बताएं, how is he as a person? We don't know nothing about Virat. We always believe there's a little Inzamam lives in your dressing room, which is Rohit Sharma. What a beautiful timer of the ball, यार. इतने shots हैं उसके पास. I'm glad that he realized his talent now, later part of the year. और आपने बड़ा इंजेक्ट किया उसको, आपने बड़ा खड़ा किया उसको कि ये भी खेल, ये भी खेल, ये भी खेल. वो तो हम सुनते रहे. Tell us a little bit about the individuals. कि ये कैसे बिहेव करते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्यों सक्सेसफुल है? बच्चों के लिए पूछ रहा हूँ. Virat is like a beast on the field. अच्छा. He's a terrier. मतलब वो एक बार ग्राउंड पे जाता है, he wants to compete. He's not worried about anybody. He'll just go and compete. And be in your face. He's passionate in your face. Off the field, totally opposite. He's a nice guy. Nicest guy. Absolutely calm. Is chilled. There's no issues about him. And that is why, for his sake, for the game's sake. See, he's been like this. He's been contributing as captain. Yes. The challenge आता है when you're not captain anymore after a span of time. Then to still have the energy to play as a player, get runs, and help India win. अगर वो करे ना, because it's not, हाँ, मजा आएगा. I mean, he would have then done a full circle. Fabulous. Now, Rohit, laid back. Rohit is like pretty much like MS. MS was unreal. ऐसा बंदा मैंने कभी नहीं देखा. या 0 बनाओ या 100 बनाओ या वर्ल्ड कप उठाओ या फर्स्ट राउंड में हारो, कुछ फर्क नहीं. And I promise you, I've seen a lot of players. इसके जैसा बंदा नहीं दिखा. I've seen even Sachin, but fantastic temperament. Sometimes get angry. ये तो कभी नहीं. कुछ फर्क नहीं. If he can avoid having the phone in his hand, he'll avoid having the phone in his hand. ये ज़माने. कसम से. I mean, honestly, and I know till today I don't have his number. I've never asked for his number. क्योंकि पता है उसके साथ है ही नहीं phone.
And if you have to get in touch with him, you know how to get in touch with him. Wow. You know, but I'm saying he's that kind of a guy. Rohit laid back, very laid back, and you know it was some time that you got the feeling the game came too easy to him. हाँ ना. Till he realized that, yeah, you know, I have it कुछ with him. करो. God's given me this हाँ. gift. Now let me also work, you know, harder and make the most of that gift. And when in full flow, yeah, there are few batsmen who will play like him. Exactly. It makes मैं it look so बांग्लादेश में easy. खड़ा हुआ था तो जिम कर रहा था, तो ऐसे एक्सरसाइज कर रहा था, तो ये क्या कर रहा है? तो मैं क्या, तेरा नाम, तुझे नाम पता है अपना? कहता है रोहित शर्मा. मैं कह नहीं GRS है. या GRS क्या है? मैं ग्रेट रोहित शर्मा. कहता भाई ये क्यों कह रहे हैं आप? मैंने कहा जो तेरे अंदर है भाई, तुझे रियलाइज नहीं कर रहा. तुम मेरे जैसे बॉलर को ना आराम से सी थ्रू कर जाए. मैं बाकी अच्छा सोचे अगर विराट होता, रोहित शर्मा होता, वसीम अकरम होता, शोएब अख्तर होता, ये सवाल सारे ही करते हैं. नो डिसरिस्पेक्ट, विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट गाय एवर, वी ऑल लव हिम एनीवेज. और वका यूनुस होता, और एक बॉल होता, और रिवर्स स्विंग होता, फिर क्या होता? इसका जवाब मैं आपको दूंगा. मैं जवाब दूंगा. एक बंदे को छोड़ दिया आपने, वसीम. वो तो पीछे से आता हो बोला वसीम. अरे यार बॉल. No, वसीम ने कहा मैंने. No, it was tough feeling. You know, it was an art. You know what, reverse swing was an art. You know, I'm glad I played in that era when there was reverse swing. You know, where techniques had to change. Even now, there's a lot of reverse swing. There's a lot of reverse swing that happens, but people have got used to it from a young age. You know, it's how you watch the ball. You know, people have now started watching the shine very closely. किस तरफ है ball, कब तैयार हो रहा है. You know, कौन से over में. You know, there's a hint of reverse swing. There are analysts in the dressing room who will say शुरू हो रहा है, and the message will go out. By that time, even the batsman would have known. So then they start adjusting their technique as to नहीं, get क्या your कमाल pads लड़ाई out होती of रवि it. भाई. हाँ? लड़ाई बहुत होती है बहुत. अंदर. बहुत. देखिए रवि भाई क्या मजे के मैचेस होते हैं ना, Yeah. है ना. It's आप भी अकड़ रहे हो आगे से 80s में, आप भी खा रहे हो बॉले. एक बॉल आपको पता है बॉल इतना रिवर्स हो रहा है, आपकी छाती पे तो लगने लगा, ये तो आपको पता है. आप हिलने रहे. मैं ये कहता हूँ रवि भाई, शायद विराट कोहली इससे आधे रन करता है, या रोहित शर्मा इससे आधे रन करता है, शायद सचिन भी. सचिन तो ऑल टाइम ग्रेट है, उनको नहीं लेते हैं हम. आधे रन करते हैं, लेकिन उनके जो आधे रन थे ना, वो दुनिया को मजा आ जाता कि क्या इनिंग्स खेल गए. See, even now, मैं बोलता हूँ आज के ज़माने में, you know, if you look at, say you're playing Australia, ये Australian attack is a deadly attack. Brutal. If you are there in the middle ना, ये कुछ नहीं देंगे आप. अगर Stark, Hazelwood, Cummins and Lyon, if they are fully fit playing in Australia, they will give you nothing. They'll give It is you have to earn a run. You know, just you know, I've been on 3 tours of Australia as a coach. Yes. You know, unfortunately, I've never had a chance to be coach against Australia and India. Yes. तो 3 बार में गया हूँ, and I know a batsman of any era would have had to work his backside off to get the runs. True. It wouldn't have been easy, you know, because you know the standard of cricket, and especially in the last 2 series, pitches also had juice. Yes. You know, there was Yes, it yes, was, yes, you yes, know, yes. there was enough there for the bowlers to keep you interested. So you know, cricket, like, you cannot compare decades. Agreed. Yeah, but you can always compare attacks. Like, always put, you know, this would have been fun. But I'll tell you, sure, that a great batsman of any era will adjust Adjust to in any era. See, I because agree. now if you're talking of 80s, just think of Bradman, just think of Viv Hutton, Richard. just think of Viv before that, the generation before that, uncovered wickets, no helmets, and there's Larwood, you know, there's Tyson, you know, there's Gilchrist, there's Hall, without helmet, uncovered, मतलब बारिश है और फिर खेलना है. So you know, you'll always find a great player will be a great player in any era. And they're just in any era. Just in any era. You know, because आते हैं, you know, there will be an era of spin, there could be an era of pace, could be an era of swing. You know, अच्छा, जेन्युइन शिकायत है, जेन्युइन शिकायत है, इट्स अ कंप्लेंट. देखिए रवि भाई, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता, आप भी खेले हैं, मैं भी खेला हूँ. रवि भाई, क्रिकेट का स्टैंडर्ड वो नहीं रहा. आप मानते हो इस चीज़ को, वो मज़ा नहीं रहा. ठीक है, आपने शायद टफ क्रिकेट खेल ली क्योंकि आप इंडिया हो, आप टूर पिक कर सकते हो, जाते हो, आपके पास लग्जरी थी, आपके पास दुनिया की लग्जरी, आपके रिसोर्सेज, आपको पैसा बढ़ा. ठीक, सच्ची बात है. लेकिन आप जिस हीरा की बात करें, जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं खेला 98 में, वो 6 फास्ट बॉलर साउथ अफ्रीका के लगे हुए हैं. सबसे स्लोएस्ट जो है वो क्लूजनर है, वो 95 माइल्स में कर रहा है.
2 आपने नए बॉल लगा दिए, रूल्स आप इतने स्ट्रिक्ट कर दिए, बैट्समैनों को आप जितना मर्जी आप लेवरेज देते हैं, 3 दायरे देते हैं। आप खुद सोचे सचिन के पास 3 दायरे होते तो आज उसके पास 1 लाख रन होता। एक बात तो मैं समझ रहा। और वो भी बेचारे, मैं उनको बेचारा इसलिए कहता हूँ सचिन को, पहले वसीम अख्तर को खेले, शेन वॉर्न को खेले, फिर अब ब्रेट और शोएब को खेलो, फिर दूसरे टाइम पे फिर दूसरे फास्ट बॉलर की जनरेशन खेलो। दैट्स व्हाई आई कॉल हिम वेरी टफ मैन। लेकिन रवि भाई इतनी सख्त क्रिकेट कर दी है, इतना बैटिंग ओरिएंटेड क्रिकेट कर दी है, जिसमें आपको आप एज अ बैट्समैन आपको मज़ा आता था कि यार फास्ट बॉलर आ रहा है, बाल उड़ रहे हैं, बाउंसर लग रहे हैं, क्राउड छलांगे मार रहा है, क्रिकेट को कहाँ लेके जा रहे हैं आप? लेकिन बैलेंस अगर करना है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ ये 2 बाउंसर नहीं होना चाहिए। Yes. वो बढ़ाओ वो थोड़ा बढ़ाओ। एंड द रीज़न वाई, और देखने यार मज़ा आएगा देखने। हाँ ना, कौन कूदता है कौन नहीं कूदता है, वो देखना है। तो मज़ा तो 250 में भी आ प्लेयर कौन है वो पता चल जाएगा, और बढ़ाओ थोड़ा। लेकिन द रीज़न यू आर सेइंग ये एन्जॉयमेंट का चक्कर इज़ बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम। देख, जब हम खेलते थे देयर वाज नो T20 क्रिकेट, देयर वाज इनफ 12, 14, 15 टेस्ट मैचेस इन अ ईयर। द bowlers used to be fitter because there was less cricket. Yes. अब जितना क्रिकेट आ गया ना, and if that same bowler is playing all 3 formats, what you expect out of him in the actual red ball format will not be the same. वो 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 खत्म हो साल जाएगा। बाद में दम, the petrol will be ये आपके ख्याल से ठीक है? no. So there the balance has to, मेरा ख्याल में Who's टेस्ट क्रिकेट has to देखिए, रवि भाई, be played by lesser देखिए। teams but more competitive. देखें, बचा कौन सकता, इस क्रिकेट को बचा कौन सकता है? किसके पास रिसोर्स है? आपके पास, इंडिया के पास। टेस्ट क्रिकेट बचानी है तो वही बचा सकते हैं, ऐसी सूत्र नहीं बचा And सकते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, that's why I'm hats off to the boys, जो हम जो खेले हैं 5 साल में, for us number 1 cricket was red ball cricket. I mean one day cricket खेलना पड़ता था because that was on the calendar, but we took great pride in playing red ball cricket and to win, which was fantastic in an era where T20 cricket भी है, 50 over cricket भी। मेरे ख्याल में टेस्ट क्रिकेट का नंबर ऑफ टीम्स जो है वो आधा होना चाहिए, and 2 groups होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। 2 groups होना चाहिए। So you want best of test cricket, just have 6 teams. लाइटर नोट, ऑन द लाइटर नोट, बड़ी हमें मज़े की बातें करी रवि भाई। आप, मुझे पता है हमेशा से आपका दिल है ना, वो कमाल शेरों जैसा दिल है आपका, और आपने खेली भी क्रिकेट ऐसे ही, आपने वैसे ही किया, एज अ कोच भी वैसे ही किया, एज अ कमेंटेटर भी ऐसे ही किया, और साफ नीयत के साथ, विद ग्रेट इंटेंशन, यू हेल्प्ड एवरीबडी, नो मैटर व्हाट कास्ट, क्रीड और नेशन, जो भी आया आपने उसको गले से लगाया। रवि भाई, व्हाट डू यू सी नाउ वेयर इंडिया क्रिकेट इज हेडिंग टुवर्ड्स? Be very honest. To be honest, I think it's a pinnacle point. It's a very important period. There will be a period of transition in another 6, 8, 10 months. I think it's very important to identify the right kind of players who take you forward in 4, 5 years. I have always believed you must have the right mix between youth and experience. And कभी-कभी change करना पड़ता है आगे देखने के लिए। This is the time they will have to do that. Really? Means कभी-कभी in the next 6 months they will have to look for that youth, जल्दी लाना चाहिए with the experience and then take it forward. If you stick with the same for too long a period of time, then the adjustment will be very difficult. अगर आपके जहन में कहीं, अगर आपको मौका मिलता, अगर लास्ट ईयर ऑफ योर कोचिंग आपका टेन्योर खत्म हो रहा था, आपने एक्सटेंड भी नहीं किया, आपने कहा यार ठीक है बस यार, मेरे गोडे शोडे खराब हो चुके हैं, घुटने गिराने मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ी बहुत कमेंट्री करूँगा, घर जाऊँगा, अपनी अचीवमेंट को गिनूँगा। कहीं आपके जहन में कहीं लास्ट ईयर में ये ख्याल आया कि यार एक आधा फास्ट बॉल कप्तान बना जाओ? कभी सोचो यार एक छोटे फॉर्मेटिंग में कप्तान बुमराह को बना जाऊँ? कभी सोच जहन में? नहीं, मैंने नहीं सोचा, क्योंकि इंडिया में वी हैड इनफ, and I never thought in that fashion at that time. I don't, in India it's going to be difficult, for a fast bowler to, I think a fast bowler captain has to be an all-rounder, basically, or he has to be a Bob Willis kind of captain who in conditions where they play, a fast bowler will always be in the game, he will be aggressive, he'll be looking to win games and take wickets. But in other places, if you see, very rarely has a fast bowler been there for too long, unless he's been a genuine all-rounder like probably Kapil, Imran, or Sagari. हमारा जब से हमने फास्ट बॉलर कप्तान बनाना बंद किया पाकिस्तान ने,
बैटिंग ने टुक ओवर किया या टेकन ओवर किया, हमारा माइंड सेट यहाँ से यहाँ आ गया, क्योंकि वो है डिफेंसिव माइंड सेट के लोग। जो मर्जी कर लें रवि भाई, बैट्समैनों का मुझे बड़ी खार आती है बैट्समैन से, मुझे तो कभी अच्छे नहीं लगे। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की यार कि यार ये तो फिर कोच है कोच जो एग्रेसिव है, कोच एग्जैक्टली कोच है। हाँ, अगर वो हिसाब है तो फिर कोच चाहिए। बट यू आर राइट, you know, a batsman captain will want batting tracks. Exactly. Very rare you will get a batting captain who will say अरे लगाओ दो। हाँ, very rare. लेकिन विराट करेगा। हाँ, विराट करेगा। हाँ, उसको डर नहीं। हाँ, वो बॉलिंग कैप्टन है। हाँ, बॉलिंग कोच भी है। आप बॉलिंग कोच भी थे, आप बॉलिंग कैप्टन भी। अच्छा रवि भाई, नाउ अब आपकी ज़िंदगी में क्या है जी? अब हमें बताएं सच, अब आप मज़ा लेंगे अपनी अचीवमेंट्स का, इजी करेंगे, कमेंट्री करेंगे, क्या करेंगे, कितना काम करेंगे? I'll take it very easy, Shoaib. To be honest, I'll still love the game. That is why you've been there for 4 decades. Yes. Commentary karunga because I'm passionate about it, but I'll choose the right kind of series here, and I'll still contribute at grassroots level if I can help youngsters. Grassroots, niche ke level pe. I'll always be there to help. In fact, at any level, but grassroots level, I'll still like to contribute from what I've learned over the years and give it back to the young generation and see where they can go after that. But I'll be involved with the game in all capacities. अच्छा, हाइपोथेटिकली सवाल करता जाऊँ, आखिरी 2 सवाल है। हाइपोथेटिकली, लेट्स से अल्लाह ना करे ऐसा हो, खुदा ना करे ऐसा हो कि इंडियन क्रिकेट कोलैप्स कर जाती है विद इन अ ईयर और 2, और मुझे लगता है, मुझसे पूछते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो माइंडसेट आपका था, जो अब है, जो होगा, और कप्तानी के मसले पड़ेंगे, इंडिया क्रिकेट विल सफर। दैट आई एम सेइंग दैट ऑन कैमरा। अगर रिकलेक्ट ना कर पाया अपने इंडियन मैनेजमेंट, अपने या बीसीसीआई ऑल टुगेदर, कहीं आपको साल बाद इन्होंने फिर कहा यार रवि भाई प्लीज एक दफा आ जाए, वुड यू एवर कंसीडर टू बिकम अ कोच और नॉट? Not coach, because I think I passed that period. But I'll definitely be there for the BCCI in any capacity to get things in order. That's if it. I don't think it will go there, but you never know. It's a big game. If things don't go right or are not managed properly, they can nosedive. If at that stage, if it God willing, it never comes. But if it does come, hope not. If my services, my experience is required, like I've done over the 40 years, I'll always be there to help. So after your operation, so you're gonna take 6 weeks off? Yeah. You know, right? New operations better than me. मेरा रवि भाई के साथ ही हो रहा है। ये हिंदुस्तान से करा रहा हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन one thing I must say, the Indian cricket should be indebted to one guy. This is Mr. Ravi Shastri, because India will or going to realize what he has done for Indian cricket. Ravi bhai, thank you very much. Pleasure. You are superstar. Yeah, and I love watching you both. I love watching you come from that long run up even 3 days ago. But it was a sight. And I'll tell you guys, whilst doing commentary, whilst playing, you saw a lot of batsmen freeze. But whilst doing commentary, he was one of the few bowlers, along with Brett, when he was at his quickest, but Shoaib in particular, who I could see it in the eyes of the batsman that there was fear. And this is the interview that I wanted to bring it for you, because रवि भाई का जो एटीट्यूड और माइंडसेट है, जो उनकी पर्सनैलिटी को मैं खोल के सामने रखना चाह रहा था, वो आपने देखा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक इन क्रिकेट एंड पाकिस्तान क्रिकेट, और अल्लाह करे एक दिन आए कि हम जल्दी से बायलैटरल सीरीज़ खेलने में कामयाब हो जाएं और हम ऐसी दोनों कमेंट्री कर रहे हैं। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर। Rawalpindi Express has left the station, that's for sure.